अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी मुआशी ऐं सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। जेकॾहिं मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त इंतिहाई वज़ीर आज़म पारां इन ॻाल्हि ते इत्मिनान जो इज़हार कयो वियो आहे त फ़ख्र जी न बल्कि फ़िक्र जी ॻाल्हि आहे, पर उन बावजूदि IMF सां जेका स्टैंड बाय जेको मुआइदो थियो आहे, जंहिं तहत IMF पारां पाकिस्तान खे $3 अरब टिनि क़िस्तनि तहत अदा कया वेंदा, वक़्ती तौर पाकिस्तान जे डिफॉल्ट थियण जो ख़तरो टरी वियो आहे। पर छा पाकिस्तान जी मईशत मज़बूत थी सघंदी? छा इन जा हाकारी असर मुल्क जी ग़रीब अवाम ते पइजी सघंदा या न? इहो हिकिड़ो वॾो सुवाल आहे। वाज़ रहे त इहो समूरो उन सूरत हाल में थियो आहे जॾहिं पाकिस्तान हिन वक़्तु तमामु घणी ॾुखी ऐं ख़तरनाक मुआशी सूरत हाल खे फेस करे रहियो आहे। इन में वज़ीर आज़म पारां MD IMF जूं पिणु दिलि जी गहराइनि सां शुक्रियो अदा कयो वियो आहे। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त हू थोराए थो आहे MD IMF जो बि। ऐं इन हवाले सां वाज़ रहे त वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म पारां इन मुख़्तसिर अरसे में 4 भेरा IMF सां इन मुआइदे जे हवाले सां राब्तो पिणु कयो वियो हो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां, जंहिंजा फ़ैसिला या जंहिंजे हवाले सां मुलाक़ातूं दुबई में थियूं ऐं इम्कान आहे त ईंदड़ कुझु ॾींहंनि में अञा वधीक ॿीहर मुलाक़ातूं जो सिलसिलो शुरू थी सघे थो। इन हवाले सां अॻूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी, अॻूणो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी तमामु घणो एक्टिव नज़र आया। हिकु ईंदड़ जेको निगरान सेटअप आहे उन हवाले सां फ़ैसिलनि जो इम्कान आहे, मौजूदा सियासी सूरत हाल जे हवाले सां, ऐं सभ खां वॾो जेको मुआशी टारगेट आहे, मुआशी जेको मामिलो आहे मुल्की सूरत हाल जे हवाले सां, उन ते पिणु गौर कयो वियो। पर गॾोगॾु इहो पिणु इम्कान आहे त ईंदड़ निगरान सेटअप जे हवाले सां बि फ़ैसिला गॾियल तौर ते कया वेंदा। चूंडुनि खां पोइ छा सिनारियो बीहंदो, इन ते बि फ़ैसिला कया वेंदा। छा इन हुकूमत हिन वक़्तु जेके मुआशी फ़ैसिला कया विया आहिनि इन खे कंटिन्यू रखण जे लाइ छा आइन में इहा गुंजाइश मौजूदु आहे त जेका मौजूदा हुकूमत आहे उहो उनखे एक्सटेंड कयो वञे? इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़ निगार जावेद लांगा साहब जॉइन कयो आहे। जावेद साहब भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। महिरबानी। जावेद साहब, मुआशी सूरत हाल ज़ाहिर आहे पाकिस्तान ते इन जा फ़िलहाल जेके आहिनि से डिफॉल्ट थियण जो ख़तरो टरी वियो आहे ऐं चई सघिजे थो त वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ जी गॾियल कोशिशुनि सां हिन वक़्तु पाकिस्तान डिफॉल्ट जे ख़तरे मां ॿाहिरि निकिरी आयो आहे, पाकिस्तान सुख जो साह खयों आहे। पर छा इन मुआशी सूरत हाल जा या इन डिफॉल्ट खां बचाव जेको थियो आहे इन जा कुझु अवाम ते असर पइजंदा? पाकिस्तान जी मुआशी सूरत हाल किथे वञी स्टैंड कंदी? बिल्कुलु ॾिसो, हिकु टिके अरसे खां IMF सां जेका इहा डीलिंग लटकियल हुई, ख़ासि तौर ते जेका अॻूणी हुकूमत हुई उन्हनि जॾहिं 8 ऐं 9 प्रोग्राम हो उहो रिव्यू में ॻाल्हियूं हली रहियूं, उन वक़्तु बैकऑफ कयो ऐं पेट्रोल जा जेके ऑल ऑफ सडन अघु वधाया, उन खां पोइ मुआइदो स्पाइल थियो। ऐं हाणोकी गवर्नमेंट अचण खां वठी कोशिशि में हुई त IMF सां इहा डील जेका स्ट्राइक थी वञे कंहिं न कंहिं नमूने सां। इन पैसनि सां, इन डील सां मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ो को लॉन्ग टर्म सभिनी पासनि ॾे को इफेक्ट त न पवंदो, पर पाकिस्तान जी जेका डिफॉल्ट वारी सूरत हाल हुई या ॻणती जो बि सूरत हाल हुई ऐं कंपेयर कयो पियो पाकिस्तान खे श्रीलंका सां उनजी मुआशी सूरत हाल सां, उहा घणे भाङे एवर्ट थी वई आहे। छाकाणि जो IMF जो जेको सिस्टम आहे मॉनिटरी, उन में जेकॾहिं को बि मुल्क अचे थो त उन ते जेको ठपो लॻे थो, उन सां उनजी हिकिड़ी रैंकिंग ऐं क्रेडिबिलिटी सॼी दुनिया में बहाल थी थिए त जेको आहे A या B C D मुल्क जेको आहे IMF जे प्रोग्राम में वञण खां पोइ इन जोॻो आहे तो पंहिंजा कर्ज़ा जेके आहिनि वक़्त ते मोटाए सघे। सम्झो त हिकिड़े क़िस्म जो सर्टिफिकेट आहे ऐं उनजो तव्हां ॾिठो सेंटीमेंट जेको आहे फील गुड फैक्टर आहे उहो स्टॉक मार्केट ऐं ॿिया जेके पासा आहिनि उन्हनि ते पवे थो। हीउ माशी इस्तेहकाम जो प्रोग्राम न आहे, पर जीअं त पाकिस्तान मुकमल तौरु डीरेल थी चुको हो सियासी इंतशार जे करे, मुआशी इंतशार जे करे, ऐं जेका मुआशरती ऐं सॼी समाजी अफ़रा तफ़री हुई उन तमामु घणो डेंट विधो मईशत खे बि। इन करे चई सघिजे थो त हिकिड़ो अहिड़ो सम्झो हिकिड़ो फील गुड फैक्टर आहे जंहिंसे गाॾी वरी पटड़ी ते चढ़ी वई आहे, हाणे उहो केॾी स्मूथली हली सघंदी ऐं कैरी ऑन कंदी, इहे मल्टीपल फैक्टर आहिनि जेके असरअंदाज़ न। ज़ाहिर आहे ही प्रोग्राम 9 महीननि जो आहे, हिन हुकूमत खे रिलीफ मिली वियो आहे। हाणे जेके पॉलिसी मेकर्स आहिनि उन लाइ ख़ुदि इहो चैलेंज आहे कि कंटिन्यूटी जेका आहे हिननि पॉलिसीज़ जी कीअं अचे। जेकॾहिं निगरान हुकूमत थी अचे त निगरान हुकूमत जे मथां को बि चेक न हूंदो आहे, उहा न का रेस्पॉन्सिबल आहे माण्हुनि ॾांहुं, न वरी जेको हुनजी कंपोज़िशन अहिड़ी हूंदी आहे जो हुनजी का अकाउंटेबिलिटी थी सघे। इहो हिकिड़ो तमामु वॾो सुवालु आहे। हिन ते चेक रखिणो पवंदो त निगरान हुकूमत ते
जॾहिं अचे त उहा बाउंड हुजे ऐं ईंदड़ जेका हुकूमत हुजे उहा कंटिन्यूटी हुजे इन्हनि पॉलिसीज़ जी ऐं कमिटमेंट जी जेके मालियाती इदारनि सां कया विया आहिनि। उन सां गॾोगॾु इहो बि थींदो त जेके ॿिया दोस्त मुल्क आहिनि पाकिस्तान जा जेके घणे वक़्त खां पैसा जेके आहिनि उहे किस्तुनि में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ॾेई रहिया हुआ उहे बि हाणे एतमाद सां पाकिस्तान खे पैसा ॾेई सघंदा ऐं उन्हनि मथां को इंटरनेशनल क़िस्म जो जेको भार न हूंदो, छाकाणि जो IMF प्रोग्राम में न हुजण जे करे पाकिस्तान जी रैंकिंग जेका आहे उहा सख़्तु मुतासिर थी रही। हाणे चाइना, सऊदी अरब या जेके बि मुल्क इमदाद या लोन ॾियणु चाहिनि था या इन्वेस्टमेंट करणु चाहिनि था उहे सवलाई सां करे सघंदा। हिकिड़ो रस्तो खुलियो आहे। बाक़ी महांगाई खे ऐं इन्हनि शयुनि खे फौरी तौर ते मुंहिंजे ख़्याल में इहो प्रोग्राम जेको आहे असरअंदाज़ न थी सघंदो, छाकाणि इहो प्रोग्राम ख़ुदि महांगाई जो हिकिड़ो ॿियो रस्तो खोलण लाइ थियो आहे। जेके कंडीशनलिटीज़ आहिनि, बिजली जा अघु वधाइणु, पेट्रोलियम लेवीज़ ऐं ॿिया जेके टैक्सिस आहिनि ऐं ख़र्चा जेके सरकारी नॉन डेवलपमेंट जा उहे घटाइण, इहे सभु कंडीशन्स जेके आहिनि ख़ुदि महांगाई खे एड कंदियूं ऐं शॉर्ट टर्म में का बि अहिड़ी सूरत हाल नज़र नथी अचे। हा, लॉन्ग टर्म में इस्तेकाम थींदो जेकॾहिं डॉलर मार्केट जेका आहे उहा स्टेबिलिटी में थी रहे ऐं पाकिस्तान जी जेके एक्सपोर्ट आहिनि उन्हनि जा रस्ता खुलनि था त पोइ आहिस्ते आहिस्ते असांखे इहा बहितरी नज़र ईंदी ऐं इन जो सॼो जेको दारोमदार आहे उहो ईंदड़ इलेक्शन स्टेबिलिटी ऐं सियासी इस्तेकाम ते आहे। ठीकु, जावेद साहब, यकीनन अवाम जी चेल मुआशी हवाले सां भॻल ई रहंदी। शहबाज शरीफ़ जी जेका सियासी स्ट्रेंथ आहे उन हवाले सां छा चवंदो? हिकिड़े तरफ़ हुन IMF खे बहितर नमूने डील करे वियो ऐं जॾहिं बिल्कुलु प्रोग्राम जो इख़्तिताम थी वियो त उतां हिकिड़ी नई इब्तिदा, नई शुरूआत थी आहे IMF जे कर्ज़ प्रोग्राम जे हवाले सां। ऐं इन खां अलावा जंहिं तरीक़े सां दोस्त मुल्कनि खे हुन इंगेज कयो, चीन अॻु में आयो, उनखां पोइ सऊदी अरब, त तव्हां सम्झो था त हिन वक़्तु ज़ाहिर आहे इहो क्रेडिट त मौजूदा हुकूमत ई खणंदी, इन ॻाल्हि में कोई शक न आहे। लॉन्ग टर्म पॉलिसियूं हलणियूं आहिनि, जेके बि मामला तइ थिया आहिनि उन्हनि खे मुस्तक़िल मिज़ाजी सां खणी हलणो आहे। तव्हां सम्झो था त इन फ्यूचर चूंडुनि जो जेकॾहिं सिनारियो थिए थो, माहौल जुड़े थो या वाट एवर जेका सूरत हाल थिए थी, त फेवरेट जेको आहे सियासी हवाले सां जेका हिन वक़्तु आहे उहो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़। तव्हां ॾिठो त ईद वारो ॾींहुं बि हुन फ़ौजी जवाननि सां, आर्मी चीफ सां गॾु फ़ौजी जवाननि सां गॾु गुज़ारियो। इन ते छा तबसरो कंदव? ॾिसो, बिल्कुलु हाणे जेको क्रेडिट हूंदो आहे हमेशह उहो टीम लीडर खे ई मिलंदो आहे। वज़ीर आज़म ज़ाहिर आहे चीफ एग्जीक्यूटिव आहे ऐं जेके बि एफर्ट्स थियनि थियूं उहे उनजी लीडरशिप में थियनि थियूं। थोरे जो वज़ीर आज़म अकेलो कुझु बि न हूंदो आहे, उनजी कैबिनेट ऐं टीम हूंदी आहे। हिन में सभ खां अहम जेको कंट्रीब्यूशन आहे उहो पाकिस्तान जी जेको गुज़िरियल हुकूमत हुई उन में फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान जी तमामु घणी मुतासिर थी, जंहिंमें इंटरनेशनल जेके पावर्स आहिनि उहे ऑलमोस्ट सभु नाराज़ हुआ। जेका सियासत हुई उन वक़्त जी, तव्हां ॾिठो त एंटी अमेरिकन बि सेंटीमेंट हो, उन में एंटी यूरोपियन बि हो, यूरोपीय यूनियन बि नाराज़ थी वई हुई, उन्हनि खे डायरेक्ट इलीगेट कयो वियो जलसनि में। हालांकि कंहिं बि मुल्क जी जेका हिस्ट्री आहे उन में डिप्लोमेसी जा जेके मामला आहिनि उहे कॾहिं बि सियासी जलसनि में या अवामी जेके मेड़ाका हूंदा आहिनि उनमें कॾहिं बि डिस्कस न थींदा आहिनि। इहे नाम्स आहिनि हिकिड़ा सॼी दुनिया में डिप्लोमेसी जा मामला या इंटरनेशनल तालुकात जा जेके मामला आहिनि उहे पॉलिसी मेकर्स बंदि कमरनि में ऐं बिहाइंड द कर्टेन थींदा रहंदा आहिनि। पर पहिरियों दफ़ो ईअं थियो त जेके सभिनी मुल्कनि खे ओपनली ॻाल्हायो वियो ऐं उन्हनि खे न सिर्फ़ु ॻाल्हायो वियो पर जेके मुख़्तलिफ़ साज़िशूं हुकूमत कराइण जूं उन्हनि खे एलिगेट कयो वियो। गॾोगॾु चाइना जो पाकिस्तान जो तमामु घणो टाइम टेस्टेड सपोर्टर ऐं इलाही रहियो आहे, उनखे पिणु सीपेक प्रोग्राम जेको आहे फ्रीज़ करे नाराज़ कयो वियो। चाइना जी वैलिडेशन हुई। सऊदी अरब जेको वॾो डोनर रहियो आहे पाकिस्तान जो, उन तनक़ीद करे सघिजे थी त उहो अलायंस कहिड़े क़िस्म जो आहे, छा आहे ऐं उनजो तवक़ातूं उमीदूं छा आहिनि। पर पाकिस्तान खे तमामु घणा पैसा सऊदी अरब खां मिलंदा रहिया आहिनि। सऊदी अरब सां तालुकात ख़राब आहे त इंटरनेशनल महाज़ पाकिस्तान जो तमामु घणो मुतासिर थियल हो ऐं अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं मुल्क की मईशत सफ़ा वेठल हुजे ऐं डिफ़ॉल्ट जा मामला हुजनि, उते सिर्फ़ु अहिड़ा टाइम टेस्टेड मुल्क ऐं दोस्त ई हूंदा आहिनि जेके मदद लाइ ईंदा आहिनि, उहे सभई कावड़ियल हुआ। त मुंहिंजे ख़्याल में हिन हुकूमत जी, वज़ीर आज़म जी या परॾेही वज़ीर जी या उनजी टीम जी जेके एफर्ट्स हुयूं उन्हनि जो इनपुट तमामु घणो ज़रूरी हो। त उन्हनि इहे तालुकात कंहिं हद ताईं बहाल करे वरिता ऐं जेका क्रेडिबिलिटी विञायल हुई उहा बहाल थी वई। इन्हनि सभई जेके एलाइज़ हुआ इन्हनि जो हिकिड़ो ट्रस्ट जेको आहे उहो हाणे की हुकूमत ते या हाणे की इस्टेब्लिशमेंट ते उहो बिल्ड थी वियो आहे। उनखां पोइ तव्हां ॾिठो इन्हनि सभिनी पंहिंजो हिकिड़ो किरदारु अदा कयो IMF जी जेका डील आहे उहा स्ट्राइक करण में ऐं उहा थी बि वई इंक्लूडिंग अमेरिका। हालांकि तमामु घणी कोशिशूं शुरूआत में कयूं हुयूं पर इहो प्रोग्राम न थी रहियो। इन करे क्रेडिट नो डाउट जेको आहे उनखे ॾेई सघिजे थो ऐं अहिड़ो माण्हू या अहिड़ो लीडर एस्टेब्लिशमेंट जो हमेशह फेवरेट हूंदो आहे जेको बिना कंहिं गोड़ गमसान ऐं झगड़े जे ख़ामोशी सां कमु कंदो रहे ऐं उनजो को वॾो ॾेखाव न करे। ऐं शहबाज शरीफ़ जी इहा क्वालिटी रही आहे तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर
ख़ामोशी सां पंहिंजा कम ऐं टास्क कंदो रहियो आहे। पर फ्यूचर लीडर जो जेको फ़ैसिलो आहे उहो मुस्लिम लीग नवाज़ में हुनजी चाबी जेका आहे नवाज़ शरीफ़ वटि आहे, छाकाणि जो वोट हुनजो आहे, पब्लिक लीडर उहो आहे ऐं उहो ई डिसाइड कंदो। ऐं जेकॾहिं वज़ीर आज़म जो नवाज़ शरीफ़ ऐं हुनजी पार्टी में पाण नवाज़ शरीफ़ कैंडिडेट न आहे त पोइ त शहबाज शरीफ़ जा इम्कान थी सघनि था ऐं एस्टेब्लिशमेंट बि उहो चाहींदी। पर जेकॾहिं पार्टी ऐं पाण नवाज़ शरीफ़ नथो चाहे या जेका आहे वज़ीर लीडरशिप ॾियणु, त पोइ ॾाढो ॾुखियो थी वेंदो। बाक़ी इहो चई सघो था त शहबाज शरीफ़ जी जेका रैंकिंग आहे या क्रेडिबिलिटी आहे उहा हिन बहिरान जे दौर में बीहण ऐं इस्तक़ामत ऐं हुन खां पोइ कमु करण जे करे ज़रूरु जेका आहे हुनजी इम्पॉर्टेंस ऐं रैंकिंग जेका आहे उहा वधी आहे ऐं इम्कान थी सघनि था त पार्टी जेका आहे उनखे कंटिन्यू बि करे। बहरहाल हिकिड़ी कोएलिशन क़िस्म जी जेका गवर्नमेंट ठहंदी फ्यूचर में बि, हुन में इहो हतमी तौरु चवणु त हुनजो वज़ीर आज़म या हुनजो लीडर केरु हूंदो इहो ॾुखियो आहे। बाक़ी आहिनि इहे ई ॿई पार्टियूं मैदान में बाक़ी बचियूं, ज़ाहिर आहे इन्हनि मां ई जेका लीडरशिप हूंदी उहा ई अहम रोल अदा कंदी ऐं इन जेको प्रोग्राम आहे माशी इनखे खणी हलंदी ऐं एस्टेब्लिशमेंट बि हाणे जेके तजुर्बा करे चुकी आहे उन खां पोइ इहो ई चाहींदी। जावेद साहब, पीपल्स पार्टी नून लीग जे अहम अॻुवाणनि जूं जेके आहिनि से मुख्य क़यादत जूं जेके मुलाक़ातूं आहिनि, इन्हनि मुलाक़ातनि जे पोयां ज़ाहिर आहे मुख़्तलिफ़ मामला सियासी हवाले सां तय थियणा आहिनि, तय थियनि पिया, फ़ैसिला कया वेंदा। छा सम्झो था, छा पीपल्स पार्टी जो इहो आहे त बिलावल भुट्टो पब्लिकली चई चुका आहिनि त भई बिलावल भुट्टो ज़रदारी हे वज़ीर आज़म थियणु घुरिजे, या वज़ीर आज़म आसिफ़ ज़रदारी अॻूणो सदर जो चवणो त बिलावल भुट्टो खे उहो वज़ीर आज़म तौरु ॾिसणु चाहे थो, जॾहिं त वज़ीर आज़म नून लीग जी बि हिकिड़ी फरमाइश या ख़्वाहिश रही आहे। तव्हां सम्झो था मामला सेटल थी वेंदा, ईंदड़ जेको सिनारियो हूंदो सियासी उन में छा थींदो, छा थी सघे थो, निगरान सेटअप जे हवाले सां छा सूरत हाल थी सघे थी, या चूंडूं मुमकिन ई नज़र नथियूं अचनि? ॾिसो, हाणे जेको सियासी लीवर आहे, पॉलिटिकल लीवर जंहिंखे चवंदासीं, उहो इन ॿिन्ही पार्टियुनि जे हथ में आहे। हाणे मुंहिंजे ख़्याल में का बि अहिड़ी पॉलिटिकल वॾी जेका आहे रुकावट या चैलेंजर न आहे, तॾहिं ई तव्हां ॾिठो हिननि जी लीडरशिप जेका आहे उहो दुबई में गॾु थी। जेको बुनियादी नुक़्तो मूंखे नज़र थो अचे उहो इन्हनि पार्टियुनि जे विच में हाणे इक़्तिदार न आहे, छाकाणि जो हुनखे ख़बर आहे त अल्टीमेटली जंहिं बि पार्टी खटियो त इक़्तिदार इन्हनि ॿिन्ही धुरियुनि मां हिकिड़ी खे मिलणो आहे। हाणे तव्हां सम्झो त अपोज़िशन बि इहा आहे, हुकूमत बि तव्हांजी ईंदड़ जेको आहे घटि में घटि दौर ताईं इहे ॿई पार्टियूं आहिनि। इन्हनि वटि हाणे जेको डिस्कशन आहे उहो आहे अख़्तियारनि जो, त जेकॾहिं फ्यूचर में खेनि हुकूमत थी मिले त उहा केतिरी बाख़्तियार हूंदी, छाकाणि जो इहे ॿई पार्टियूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में ॿ टे तजुर्बा करे चुकियूं आहिनि इक़्तिदार खां निकिरण जूं ऐं इक़्तिदार खां में हासिलु करण जा। इन्हनि सभिनी दौरनि में इहे कॾहिं बि मुकमल तौरु बाख़्तियार न रहिया आहिनि। मुल्क जी तारीख़ में पहिरियों दफ़ो हिकिड़ो अहिड़ो तजुर्बो थियो आहे जंहिंसां मुल्क जी एस्टेब्लिशमेंट हिकिड़ी वॾी सियासी ग़लती खां पोइ हिकिड़ी कमज़ोर पोज़ीशन ते हुई ऐं हाणे वरी जेको आहे आहिस्ते आहिस्ते उहो पावर असर थो थिए। मुंहिंजे ख़्याल में ॿिन्ही पार्टियुनि वटि जेको लम्हाए फ़िक्र इहो आहे त इक़्तिदार हासिलु करण खां पोइ केतिरा बाख़्तियार हूंदा ऐं केतिरा फ़ैसिला करे सघंदा ऐं दुनिया सां कमिटमेंट कंदा। हींअर तव्हां ॾिसो, जेकॾहिं इहो जेको माशी प्रोग्राम आहे या इंटरनेशनल पावर सां इंगेजमेंट आहे या सीपेक जा मामला आहिनि चाइना सां, इहा सियासी क़यादत ई निगोशिएट कया आहिनि। वरी पहिरियां बि उन्हनि निगोशिएट कया, सीपेक जहिड़ो प्रोग्राम जेको आहे उहो बि सियासी क़यादत ई जेका हींअर इक़्तिदार में आहे उन्हनि ई जेको आहे बुनियादु विधा, उन खां पोइ अॻिते कैरी ऑन कयो। हाणे बि कमिटमेंट्स उन्हनि खे करणियूं आहिनि। इन करे हाणे सॼी जेका जंग आहे उहा अख़्तियारनि जी आहे, त ईंदड़ जेका हुकूमत हूंदी उहा फ़ैसिला करण में केतिरी बाख़्तियार हूंदी ऐं डिफाइनिंग टाइम आहे। ऐं हिननि सियासी पार्टियुनि खे तजुर्बे जे आधार ते इहा ख़बर आहे त मुल्की एस्टेब्लिशमेंट खां स्पेस वठण जो इहो ई टाइम आहे जॾहिं मुल्क बहिरान में आहे। मुल्क में जॾहिं मुआशी इस्तकाम अची वेंदो त पोइ शायदि पॉलिटिक्स जी, पॉलिटिकल लीडरशिप जी, उनजे रोल जी एॾी ज़रूरत न पवंदी आहे। पोइ एस्टेब्लिशमेंट तमामु घणी माइटी थी वेंदी आहे ऐं आज़ादाना फ़ैसिला कंदी आहे। इहो सॼो फोकस जेको दुबई में तव्हांखे नज़र थो अचे पियो, केयर टेकर सेटअप, आइनी मसइला, इहे सानवी हैसियत था रखनि पिया। मुंहिंजे ख़्याल में ॿिन्ही पार्टियुनि डिसाइड करे छॾियो आहे इलेक्शन जे नतीजे में जेको बि ईंदो इहे ई ॿई हूंदा ऐं जंहिंजी मेजॉरिटी हूंदी उहा हुकूमत खे या कोएलिशन खे लीड कंदी ऐं ॿी धुर जेका आहे ख़ामोशी सां अपोज़िशन में हूंदी। वाइस वर्सा हूंदो, जेकॾहिं मुस्लिम लीग नवाज़ खटे थी त पंजाब ऐं फेडरेशन उन वटि हूंदो, सिंध जेका पीपल्स पार्टी ऐं ईअं ई ॿिया सूबा उते बि जेको कोएलिशन गवर्नमेंट हूंदियूं। इहो को एॾो वॾो पावर शेयरिंग जो हिकु फार्मूलो इशू न अच्छा, आहे, जावेद साहब, चई इशू आहे सघे थो त अख़्तियारनि जो। सियासी तौरु इहे पार्टियूं हाणे एतिरो तजुर्बो हासिल करे चुकियूं आहिनि, मैच्योर थी वियूं आहिनि, हाणे हिननि खे ख़बर आहे त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हिननि पार्टियुनि जी बक़ा बि आहे। एग्ज़ैक्टली ईअं आहे। इन करे सॼी जेका डेलिब्रेशन डिस्कशन आहे उहा फ्यूचर में अख़्तियारनि जी आहे, छाकाणि जेकॾहिं अख़्तियार हिकु दफ़ो ॿीहर
सिविलियन सेटअप खे न मिलियो ऐं कंहिं न कंहिं तरीक़े सां अहिड़ियूं हुकूमतूं ठहियूं जहिड़ियूं माज़ी में ठहियूं बेइख्तियार क़िस्म जूं ऐं अहम फ़ैसिलनि खां ॿाहिरि रहियूं त पोइ माशी इस्तेकाम बि तव्हांखे न मिलंदो, सियासी इस्तेकाम बि न मिलंदो। हिकिड़ी ॿी जेका इनस्टेबिलिटी जेका आहे उहा इन मेकिंग हूंदी। त जेका सॼी लीडरशिप आहे इन ते ई डेलिब्रेशन करे पई ऐं ज़बरदस्ती राइट टाइम आहे इन्हनि पार्टियुनि लाइ त पंहिंजो जेको किरदारु ऐं पंहिंजो जेको पॉलिटिकल पावर आहे उहो असर्ट बि कनि ऐं निगोशिएट बि कनि ऐं उनखे कैपिटलाइज़ कनि जीअं मुस्तक़बिल में अॻिते जेको आहे सिविलियन सेटअप डिलीवर करे सघे ऐं अहिड़े क़िस्म जा बहरान जेको आहे न पैदा थियनि सिस्टम में जहिड़ा असां हाणे रिसेंटली ॾिसी चुका आहियूं। वॾी महिरबानी जावेद साहब, तव्हां पंहिंजो तस्दियो ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़निगार जावेद डांगा असां सां गॾु, हुननि जो चवणु हो त शायदि इहे पार्टियूं हाणे इहो सम्झी चुकियूं आहिनि, नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी, त सियासी इस्तेहकाम सां मुआशी इस्तेहकाम अची सघे थो ऐं इन्हनि सियासी पार्टियुनि जी बक़ा ऐं जियापो बि आहे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में ॻाल्हि कंदासीं। सिंध में हिन वक़्तु सख़्तु गर्मी आहे, न रुगो सिंध में, सॼे मुल्क में, पर ख़ासि करे सिंध जी जेकॾहिं ॻाल्हि कंदासीं, कराची, हैदराबाद, लाड़काणो, दादू, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, समूरी जैकबाबाद, समूरी सिंध में हिन वक़्तु गर्मी जो कहर बरक़रार आहे। घुट ॿूसट वारो माहौल आहे ऐं जेको गर्मी पद आहे 41-42 सेंटीग्रेड ताईं पहुची चुको आहे। इन सूरत हाल में ईद वारनि ॾिहाड़नि खां वठी ऐं हूअं मुसलसल बिजली जी जेका लोड शेडिंग आहे उहा तमामु घणी वधी वई आहे, जंहिं माण्हुनि जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। कराची में बिजली जो जेको बहरान आहे, जंहिंजे करे माण्हू पिणु शदीद एहतजाज करे रहिया आहिनि 10 खां 12 कलाक, जॾहिं त हैदराबाद सिंध जो ॿियो नंबर वॾो शहर जिते बिजली जो जेको बहरान आहे 18 खां 20 कलाकनि ताईं पहुची चुको आहे। ॿहिराड़ी वारा इलाइक़ा त बिजली खां बिल्कुलु कई ॾींहंनि खां महरूम बणियल आहिनि। हिन वक़्तु ज़ाहिर आहे गॾियल हुकूमत आहे, नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी, इहा ज़िमेदारी ॿिन्हिनि ते लागू थिए थी। वाज़ रहे त कुझु ॾींहं अॻु में बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म खे मुख़ातिब थींदे पिणु चयो हो त बिजली जी लोड शेडिंग जे करे हू अवाम में या पंहिंजे हल्के में वञी नथा सघनि। मेंशन करण जे बावजूदि इन जो नतीजो इहो निकितो त सिंध में अण ऐलानियल लोड शेडिंग जो सिलसिलो जारी आहे। बिजली जे अख बूट जे करे माण्हू सख़्तु परेशानियुनि खे फेस कनि था। जिते बिजली नथी हुजे उते पाणी जो बहरान थिए थो। माण्हुनि जूं बिजली जे लोड शेडिंग जे करे अच वञ जे करे जेके शयूं आहिनि, इलेक्ट्रिकल शयूं आहिनि, उहे पिणु सड़ी वञनि थियूं। इन हवाले सां प्रोग्राम जे ॿिए हिसे खे ख़ासि तौर ते मूं तरतीब ॾिनो आहे अॼोके प्रोग्राम में इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ त सीनियर सियासी अॻवान पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ ताज हैदर साहब मूंखे ज्वाइन कयो आहे ऐं नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सिद्दीकुल फारूक साहब मूंसां गॾु आहिनि। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ताज साहब, शुरुआत करूंगी आपसे। इस वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और सिंध के अवाम के लिए सख्त गर्मी में इस वक्त आप जानते हैं कि किस कदर पूरे मुल्क में गर्मी है और ख़ास करके सिंध में जो गर्मी है, कराची, हैदराबाद या दूसरे शहरों में, उसमें शदीद जो लोड शेडिंग और बिजली का बहरान है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है जी, वो अपने जो वापडा की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये वो कर रही हैं, यहाँ कराची इलेक्ट्रिक कर रही है और हम मुसलसल इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत से कह रहे हैं और यहाँ तक हमने कहा कि जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हम संभाल लेते हैं। हमने बार बार उनको कहा कि जी जो कराची इलेक्ट्रिक से आप दूसरा मुआहदा कर रहे हैं तो उसके अंदर हमसे भी थोड़ा सा मशवरा कर लीजिए। कल भी शायद हमारे जो एनर्जी के वजीर हैं उन्होंने अखबारात के जरिए कहा है कि हमें भी मशवरे से शरीक कीजिए। अच्छा, बहुत कोई 6 महीने पहले मैंने और सलीम मांडीवाला साहब ने सेनेट में ये रेजोल्यूशन डाला था कि हम सोलर पार्क लगा सकें सनती इलाकों में और उन सोलर पार्क से हम जो है वो इंडस्ट्रीज को बराह रास्त बिजली फरोख्त कर सकें। सेनेट ने उसे इत्तेफाक राय से मंजूर किया। तहरीक इंसाफ के भी जो सेनेटर्स थे उन्होंने हमारा साथ दिया उसके अंदर। फिर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एक डिप्टी सेक्रेटरी लिखता है कि ये जो आप मिनिस्टर साहब को मैंने खत लिखा, वो डिप्टी सेक्रेटरी मुझे लिखता है कि जनाब ये पॉलिसी के खिलाफ है।
تو میں کہا جی ڈپٹی سیکرٹری صاحب یہ کس پالیسی کی بات کر رہے ہیں. میں نے پھر منسٹر صاحب کو خط لکھا. یہاں پہ ہم نے تمام جو ہمارے صنعتی علاقے ہیں ان کا سروے اور یہ تمام مکمل کر لیا ہے. کوشش یہی ہے کہ 7-8 روپے یونٹ پہ بجلی مل جائے. گھر کے اندر ہم 3 روپے یونٹ اس وقت جو نئی پلانٹ ہے اس کے اندر ہم بجلی بنا رہے ہیں. 3600 میگا واٹ ہم بجلی بنا کے اور پنجاب کو دے رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ نہیں مل رہا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں فیڈریشن سے کہ ہمیں کام کرنے کی اجازت دے دیں. اور کل بھی میں نے جو نوٹ سرکولیٹ کیا ہے رینڈم تھاٹس کا جو میرا جاتا ہے قیادت کے پاس اور دوسرے دوستوں کے پاس, اس میں یہی کہا ہے کہ بھئی آرٹیکل 157 آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ اپنے پاور پلانٹ بنا سکتے ہیں, آپ اپنی ٹرانسمیشن لائنیں ڈال سکتے ہیں, آپ جو ہے ٹیرف مقرر کر سکتے ہیں. تو اگر ہم 3 روپے یونٹ بنا رہے ہیں تو ہم سے 55 روپے یونٹ کیوں لیا جا رہا ہے؟ میں نے یہی کل کہا ہے کہ جی آرٹیکل 157 کے تحت آپ کارروائی کریں اور اس سے جان چھوڑائیں یہ وابدہ کے یہ وغیرہ. ہم سندھ کے اندر اگلے 2 لاکھ گھروں پہ تو اس وقت لگا رہے ہیں. اگلے 5 سال کے اندر ہر گھر پہ انشاءاللہ سولر پینل جو ہے وہ لگ جائے گی. اس سال بھی ہم نے کوئی 10.5 ارب اپنے بجٹ میں رکھے ہیں جس سے اسکولوں کے اوپر, اسپتالوں کے اوپر, جیل خانے پر بھی, دوسری تمام پبلک بلڈنگز پہ ہم سولر پینل انشاءاللہ اس سال کے اندر لگا کے اور اس کو بڑی حد تک ختم کر دیں گے. جب تک کہ یہ معاملہ صوبائی حکومت اپنے ہاتھ میں نہیں لے گی آرٹیکل 157 کے تحت اور ان سے جان نہیں چھوڑائے گی فیڈریشن سے, تو اس وقت تک یہ معاملہ یوں کا یوں رہے گا. لڑائی جھگڑا, سینٹ کے ریزولوشن, یہ تمام چیزیں کوئی سن ہی نہیں رہا, سنتے ہی نہیں ہے کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں. سٹی گفار صاحب, تاج حیدر صاحب بڑے سینئر سینیٹر پیپلز پارٹی کے, انہوں نے کہا کہ کوئی سن ہی نہیں رہا, کوئی سنتا ہی نہیں ہے, اور جب تک صوبوں کے پاس یہ معاملہ نہیں آئے گا, صوبہ ولنگ ہے کہ ان کے پاس یہ معاملات آنے چاہیے. بلاول بھٹو زرداری نے کچھ دن قبل جب شہباز شریف صاحب آئے تھے ان سے بالکل کھلے طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. انہوں نے بڑا مینشن کیا تھا کہ ہم اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے, لیکن اب تو حد ہو چکی ہے. 18 سے 19 گھنٹے جو ہے بجلی غائب رہتی ہے, کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاج حیدر صاحب کی تمام علمیت اور ان کی سینیارٹی کی عزت کرتے ہوئے, احترام کرتے ہوئے, مجھے ان کا جو یہ فیڈریشن سے جان چھڑانے کی بات انہوں نے کہہ دی, یہ ذرا تھوڑا سا میرے خیال میں جلدی میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں. سٹی گفار صاحب ذرا تھوڑا تیز بولیے گا, آپ کی آواز کم آ رہی ہے. ہاں, یہ جو بات انہوں نے کہہ دی ہے نا فیڈریشن سے جان چھڑانا, جی تو یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی. پہلی بات یہ ہے کہ 3 روپے یونٹ یا پن بجلی 2 روپے یونٹ, انرجی مکس کی بات ہوتی ہے کہ ایک ملک میں جو بجلی 30 روپے یونٹ بھی بنتی ہے, 40 بھی بنتی ہے, 20 بھی بنتی ہے, 15 بھی بنتی ہے, سب کو مکس کر کے اس کا ایوریج نکال کے پھر دیکھا جاتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے. ہم نے تو 12,000 میگا واٹ بجلی جناب نواز شریف نے بنا دی تھی, اور بلکہ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی انہوں نے کہا تھا وہ زیادہ بجلی بنا گئے ہیں. اب پی ٹی آئی کی حکومت کے 4.25 سال میں کیا ہوا, تاج حیدر صاحب چونکہ سینٹ میں بھی بیٹھتے ہیں اور حکومت میں شامل ہیں, یہ ان کی بھی حکومت ہے, مسلم لیگ نون کی ہے تو پیپلز پارٹی کی بھی ہے. جی اس لیے اگر گلہ کو بنتا ہے کابینہ میں کریں. دبئی میں بیٹھے ہیں آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب بھی گئے, وہاں بات کریں تو یہ ساری باتیں کر کے بالکل درست بات ہے, اس کا حل نکالیں. صوبے کے پاس اختیارات ہیں, اپنے دائرہ اختیار میں جو چھوٹے یونٹ لگا سکتے ہیں, جو یہ اپنا سولر پینل کر سکتے ہیں, وہ ضرور کریں. میرا خیال ہے اب وقت جو ہے وہ بالغ نظری بالخصوص مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادتوں کا وہ وقت ہے
JUI کا وہ وقت ہے, PDM کی قیادتوں کا وہ وقت ہے کہ بالغ نظری سے, میچورٹی سے کام لیں, الزامات سے نکلیں اور اس کا حل سارے بیٹھ کے ادھر طے کریں. اگر ڈپٹی سیکرٹری لکھتا ہے تو ڈپٹی سیکرٹری کے کون سی پالیسی آپ ابھی ٹاک شو میں فرما رہے ہیں, تو بیٹھیں, واپس بلائیں اسے, سینٹ کی کمیٹی میں متعلقہ میں بلائیں, پھر منسٹر کے پاس بیٹھیں اور جو مسئلہ ہے قانون سازی کریں, اور جہاں وسائل کی کمی ہے وسائل پورے کریں. تو اب میں سمجھتا ہوں بہت حد تک الحمدللہ احساس پیدا ہوا ہے. پہلے جو کھیل کھیلا جاتا تھا سیاسی جماعتوں کے ساتھ, لیڈرشپ کے ساتھ, امید ہے کہ آئندہ وہ کھیل نہیں کھیلا جائے گا, اور پاکستان کے عوام کے قطع نظر اس کے کہ کوئی سندھ میں رہتا ہے, پنجاب میں رہتا ہے, KPK میں رہتا ہے, یا بلوچستان میں, کشمیر میں, یا وہ جناب گلگت بلتستان میں, سب کے مسائل یکساں طور پر پوری درد مندی کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ حل کیے جائیں. جی تاج اظہر صاحب, گفتگو آپ نے سنی. صدیق صاحب کا کہنا ہے کہ الزامات نہیں, فیڈریشن والی بات ان کو بالکل پسند نہیں آئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ الزامات لگانے کے بجائے ایک ہی بات ہے, نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی حکومت مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے, کیونکہ ابھی دبئی میں بھی یہ ملاقاتیں ہوئی تھی, تو کیوں نہیں حل نکالا گیا؟ جی میں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے خوشامدیں کی ہیں, جو ہمارے منسٹر آف پاور ہیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں, اور میں صرف فیڈریشن سے یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں کام تو کرنے دیں. میں نے پچھلی بجٹ کی جو, اس دفعہ تو خیر بجٹ پہ مجھے تقریر ہی نہیں کرنے دی گئی, پچھلی جو بجٹ کی تقریر تھی اس میں پورا پروگرام اور کہ کس طریقے سے چھور و اسلام کوٹ کے درمیان ریلوے لائن ڈالی جا سکتی ہے. $27 فی ٹن ہم کوئلہ یہاں پیدا کر رہے ہیں, $400 فی ٹن جو ہے کوئلہ جو ہے درآمد کیا جا رہا ہے, اور اس درآمد پہ ٹیکس کی بھی چھوٹ دے دی گئی, درآمدی ڈیوٹی کی بھی چھوٹ دے دی گئی. یہاں جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہماری فائننس کی تھی اس میں اسحاق ڈار صاحب کے سامنے بالکل دستبرسہ اور لکھ کے ان کے سامنے پروپوزل دیا گیا کہ حضرت یہ تو چھوٹی سی ریلوے لائن ہے, وفاقی حکومت نہیں کر سکتی, تو ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم یہ ریلوے لائن ڈال دیں تاکہ پاکستان کے بجلی گھروں میں یہ پہنچ سکے اور ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں کوئلے کے. جی تاج صاحب آپ بہت صحیح کہہ رہے ہیں, بجٹ کے جو پروپوزل کمیٹی سے بھیجا گیا, بجٹ کی جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے. پچھلے سال میری بجٹ تقریر کے بعد کہ جناب یہ ریلوے لائن ہے, محترم ہمارے شہباز شریف صاحب وہ فوراً ایکشن لیتے ہیں. وہ گئے تھر کے اندر اپنے ہمارے وزیر اعلیٰ کو ساتھ لیا, وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ 23 مارچ کو یہ ریلوے لائن ریلوے چلے گی اور یہ کوئلہ. لیکن پاورفل لابیز ہیں جو ان کو بھی کام نہیں کرنے دے رہی کہ بھئی کس طریقے سے کہ $400 کا ہم منگائیں گے کوئلہ, یہ جو آپ $27 پہ کوئلہ پروڈیوس کر رہے ہیں اور جس سے 3600 میگا واٹ آپ بنا کے گرڈ کو دے رہے ہیں, یعنی 1800 میگا واٹ کیپیسٹی تھی لائن کی. میں نے جب سوال ڈالا کہ جناب ہماری پاور پلانٹ سے کہیں زیادہ بجلی کر رہی ہیں, دوسری لائن کا ہے, تب مہربانی کی خرم دستگیر صاحب نے اور جلدی وہ لائن جو تھی دوسری جو لگ رہی تھی وہ مکمل ہوئی کہ یہ. لیکن اب ہم 4500 میگا واٹ پہ جا رہے ہیں دسمبر کے اندر, وہ لائن بھی کم ہو جا رہی ہے. تو اب یہ کہ اور یہ میں نے عرض کیا کہ جناب علی اس وقت $3 فی یونٹ جو ہماری لیٹسٹ پلانٹ جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے. اچھا یہ جو ہے معاملہ, اور میں سارے ڈاکومنٹس, سارے پروپوزلز, ہر چیز میں اس پہ آپ کو بھی بھیج رہا ہوں سبین, اور میں اپنے بھائی صدیق فاروق صاحب کو, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ درد مند آدمی ہے, یہ ہماری فریاد کو سن کے اپنے لوگوں کو کہیں گے کہ بھائی ان کو بس اجازت دے دو کہ یہ اپنی بگڑی خود بنا لیں. میرے اس پہ ہے یہ جو واٹس ایپ کے اوپر کل ہی میں نے یہ کہا کہ آرٹیکل 157 کو انفورس کریں, اور انڈسٹریل بالکل میں کوئی ہماری فریاد سننے والا تو ہو,
आबादी हमारी 3 करोड़ कम कर दी जाती है, ये तमाम चीजें होती हैं। और मैं और हम 4 सिंध के सीनियर सेनेटर्स सेनेट के अंदर रेजोल्यूशन डालते हैं, हाँ साहब ये कमेटी सुनेगी। उस कमेटी को 3 महीने कमरा नहीं दिया जाता कि जिसमें वो मीटिंग कर सके। हम एडजर्नमेंट मोशन डालते हैं, 8 सेनेटर्स आदमशुमारी पे, वो फौरन प्रोरोग कर दिया जाता है। अब ये तमाम चीजें जो हैं ये क्यों की जा रही हैं मेरी समझ में नहीं आता। और हमें पता है कि इसका नतीजा कुछ नहीं होगा, लेकिन कम से कम हमें फरियाद तो करने दें, हमें कहने तो दें कि भाई ये हम खुद कर लेंगे। मैं जब चेंबर से बात कर रहा था ये इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर सोलर प्लांट लगाने में, तो मैंने उनसे कहा कि मैं हुकूमत से सिंध से कहता हूं कि आधे पैसे वो डाल दें, आधे आप लोग डाल दें। उन्होंने ताजदर साहब इजाजत दिला दीजिए, सारे पैसे हम डाल देंगे। 8-9 रुपए की यूनिट बिजली ये, और कितने दिन में लगती है सोलर प्लांट? ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर। ये 8-9 रुपए की यूनिट की, जिससे कि हम कोई 1,500 पौने 2,000 मेगावाट फ्री कर देंगे डोमेस्टिक और कमर्शियल यूज के लिए। ये लोगों ने नए नए कानून बना दिए कि जनाब जहां से रिकवरी नहीं हो रही वो पूरा इलाका बंद। कहां से रिकवरी नहीं होती? गरीबों के घर से नहीं होती। और गरीबों के घर पे क्योंकि कम टैरिफ लगता है, इसलिए वो जो बिजली बना रहे हैं और बेच रहे हैं उसको उन इलाकों में बेच रहे हैं कि जहां ज्यादा टैरिफ हो। अब ये तमाम चीजें अब हमें कहें कि जी बैठ के बात कर लीजिए, कोई बातें होगी, अब काम करें। नहीं, आप बिल्कुल काम ना करें, हमें काम करने दें। सबसे बड़ी रुकावट सिद्दीकुल फारूक साहब इस वक्त हमारे सामने फेडरेशन है। हमें करने दें काम, हम कुछ नहीं कहते। हम आपको ये भी जो बन रही है 3,600, ये हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये वहां जा रही है मटियारी, और मटियारी से आगे जा रही है दूसरे सूबों को। ताज साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, वक्त बड़ा महदूद है। इसका मैं जवाब लेके वाइंड अप की तरफ से साहब, ताज हैदर साहब ने बिल्कुल खुले तरीके से कह दिया कि सबसे बड़ी जो रुकावट है वो फेडरेशन है। मैं ताज हैदर साहब से बाकी बातों का जवाब देता हूँ जी। एक मरतबा फिर अर्ज करूँगा, आप ये न कहें कि रुकावट फेडरेशन है, आप ये फरमाइए कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कुछ लोग रुकावट हैं। फेडरेशन तो फिर 4 सूबों का जो इस वक्त पाकिस्तान है, फेडरेशन तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज द फेडरेशन, तो इसका मतलब है पाकिस्तान की फेडरेशन रुकावट है। आप एक एक लफ्ज सोच समझ के इस्तेमाल फरमाते हैं। आप बहुत आलिम फाजिल आदमी हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, अब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये मार के इस हालत पे पहुंच गया। सुने नहीं, मैं आपको रोगने बादाम, आप मुझे वो भेजें अपना, ये जो आप मुझे भेजना चाह रहे हैं, आप मुझे फोन नंबर दीजिए, मैं अभी। जी, ये इनके पास है मौजूद नंबर। जी, मैं सेंड कर देती हूँ ताज साहब को, बिल्कुल सेंड कर देती हूँ प्रोग्राम के बाद। मैं ताज हैदर आपको, मेरे भाई हैं, बड़ी शफकत से हमेशा मुझे मिले, मेरे ऊपर बड़ी शफकत है इनकी, और मैं अभी उनको भेजता हूँ। जी बहन, और मैं ताज हैदर साहब को यहाँ से खालिस घानी का रोगन बादाम भेजता हूँ, उससे मालिश कराएं ताकि अगर ये जिटरी हो रहे हैं तो वो ठीक हो जाए। दूसरी बात यह है कि मैं पीपल्स पार्टी से दरख्वास्त करूँगा कि वो बराह करम ताज हैदर साहब को सूबे की बिजली का चार्ज दें, क्योंकि इस वक्त ये गुफ्तगू कर सकते हैं, ये नज़रिया पेश कर सकते हैं, ये वर्किंग पेपर बना सकते हैं, लेकिन फ़ैसला करना, मुतल्लिका लोगों से मिलना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, वो तो मिनिस्टर कराएगा, वो चीफ मिनिस्टर कराएगा। तो जो भी मुअस्सर ओहदा है वो ताज हैदर साहब ऐसे लोगों को मिलना चाहिए, ये ज़रूरी है। और एक और बात वो ये है कि हुजूर जो इन्होंने कहा था कि बात असर करे ना करे, सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा या आज़ाद। तो ये शायरी नहीं है, ये मसाइल हल करने का मामला है। इसमें तो फ़ैसले करने पड़ते हैं, फ़ैसले इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। विफाक में पीपल्स पार्टी रही है, एक मरतबा नहीं रही। भुट्टो साहब रहे, अल्लाह उन्हें बख्शे। बेनज़ीर साहबा 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहीं। जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे 5 साल। आप विफाक को, फेडरेशन को भी जानते हैं, आप सूबे को भी जानते हैं। इसलिए फिर अर्ज़ करूँगा
मिल बैठ के ये अपनी बातें अपनी पार्टी के हाईएस्ट लेवल पे रखें और उन्हें कहें कि इस हवाले से पूरी फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ के लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तय करें और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो पूरी तेज़ रफ्तारी से। बहुत शुक्रिया ताज साहब। प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले आपको बता दूं मैंने नंबर सेंड कर दिया है सिद्दीकुल फारूक साहब का। आपको आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन हॉट प्रोग्राम जो वक्त पड़े पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही। एंथनी इंट्रो ले लो मेरे से।